प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रतीक्षा एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। तो आइए हम पहले डिफिनेशन देखते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के बदले बोला जाता है अथवा कहा जाता है अथवा लिखा जाता है हिंदी में। अब अंग्रेजी में प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। मतलब प्रोनाउन एक प्रकार का वर्ड या शब्द होता है जो कि नाउन के बदले में बोला जाता है अथवा कहा जाता है अथवा लिखा जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस। तो देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। तो व्हाट डू मीन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन? The personal pronoun, they are different from the shows, person, numbers and genders are known as a personal pronoun. For example, I, we, you. That is the personal pronoun. Now we are discussing about the possessive pronoun. The possessive pronoun are a form of person pronouns. They are show ownership. For example, mine, your, his, her, their, etc. Now we are discussing about the indefinite pronoun. The indefinite pronoun refers to the people, places, or the things in general. For example, all, either, any, few, some, etc. Now we are discussing about the demonstrative pronouns. So the pronouns tells which one or which group of the person, place or things are referred to. This, that, these, those. These used for near, that used for far, these used for plural for near, those used for the long for plural. So now we are study about the relative pronoun. The a relative pronoun refer to an earlier noun sentence of a part of a sentence. For example, all, either, any. That is the relative pronoun. As a relative pronoun, we are used as who, what, where, etc. Now we are discussing about the distributive pronoun. So the distributive pronoun is defined as the pronoun which refer to the person or the things one at a time are called distributive pronoun. As example for each, either, neither, either are, neither nor, not only but also. That is the distributive pronoun. Now we have defined about the possessive pronoun. The word that used to indicate that sometimes belongs to someone else. It is used to indicate a relationship of possession in a broad sense. For example, mine, yours, his, her, ours, etc. That is the possessive pronoun. Now we are discussing about the reciprocal. We use reciprocal pronoun when two subjects receiving the benefits are consequence of that action simultaneously. That is called reciprocal pronoun. धन्यवाद। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो हमने आज प्रोनाउन के 8 भागों के बारे में पढ़ा। तो जिसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके साथ इम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है। तो द इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है
कि द वर्ड्स which emphasis of the person or the subject known as the emphatic pronoun, तो इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ होता है। जैसे हम कह सकते हैं आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, आई माई सेल्फ रिसीव द लेटर, that is known as the emphatic pronouns. The emphatic pronouns is the opposite of the reciprocal pronouns. So there are 9 types as a pronoun. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।